वेबिनार सीरीज। कल जो हमारा हिस्टोरिक सेशन हुआ उज्जवल पटनी जी का, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2100 लोग सम्मिलित हुए थे, उसके बाद आज नया सेशन है और मेरे दोस्त और गाइड शिवराम जी है। आज का टॉपिक है बिजनेस प्लान एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट गोल्डन फर्नीचर। ये जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मैं इस पे बहुत काम कर चुका हूँ। बहुत बारी हम सोचते हैं जो हमारी बिजनेस की गाड़ी है वो कैसे चलेगी, और बिजनेस का प्लान में हम लोग एक जगह से दूसरा जगह जाने का प्लान करते हैं, लेकिन ये गाड़ी कौन से रूट से जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ पे सिग्नल आएगा, कहाँ पे टर्न लेना है, ये जो सब करना है दैट इज़ बिजनेस प्लान, और वो हम करना भूल जाते हैं। और जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी में कितना पेट्रोल लगेगा, अपने पास कितना पैसा है, कब पेट्रोल लेना है, कौन से स्टेशन पे लेना है, ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते। तो इसके लिए आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट और स्पीकर है, मिस्टर ए शिवराम। ही इज़ द फाउंडर ऑफ रिटेल गुरुकुल and a very close friend of mine. He is a very popular consultant across India and also abroad in many of the Asian countries. उन्होंने लगभग 350 से ऊपर छोटे, मीडियम और लार्ज ज्वेलर्स को कंसल्टिंग किया है, और उनका स्पेशलिटी ये है कि बेस्ट डिटेलिंग प्रैक्टिसेस में वो ट्रेनिंग देते हैं, जिससे लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। और उनका खासियत यह है कि ही हैज़ बीन द मर्चेंडाइजिंग हेड फॉर तनिष्क। हमारे आज तक के सभी माइंड स्पीक के वेबिनार में, हर एक वेबिनार में एक बार तो तनिष्क का नाम आ ही जाता है। और उनके जो मर्चेंडाइजिंग हेड थे शिवराम जी, वो आज हमारे साथ है, और उनका फेवरेट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और ये टॉपिक को लेकर उन्होंने बहुत सारे लोगों को कंसल्टिंग किया है, और उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली इम्प्रूव करके उन्होंने लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब आप लोग ध्यान से शिवराम जी जो बताएंगे सुनिए। ओवर टू शिवराम जी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। Thank you, Ashish bhai, Ashok bhai, Avinash ji, and everybody, in charge of, behind, in front of Mindspeak. शिवराम जी, just to English. Oh ji, okay. So he knows my Hindi. So and जो अशोक भाई हर वेबिनार के स्टार्ट में कहते हैं कि we request everyone to put their videos off so that the bandwidth is better utilized. Thank you. Cool. Right. So thank you so much to all the I'll say leaders and people who are working here on this Mindspeak session, Mindspeak program itself. What I will do is I have two modules, right? One is on business planning, and the other one is on inventory management. I hope we will take about 30 minutes and 15 minutes, and then we'll try and open up for question and answers. तो हम कोशिश करेंगे कि we'll speak in both the languages. Let's see how it goes. I'll share the screen. If you can see the screen, please type yes. Yes. Okay, cool. Right. So the first module is on business planning, right? And नमस्कार, नमस्कार इसमें 2-3 मैसेजेस है मेरा। एक तो काफी लैंग्वेजेस अभी देख रहे थे कि we saw people from all across the country, so we'll try and do 2-3 things. This namaskar slide has another meaning for me, right? Which is I can be I always appreciate and congratulate all the retailers. It's not an easy job to be in retailing from morning till evening and manage, whether it's a small store or a big store.
what I would also like to ask your permission really is two things. One is, can I speak from my heart? And if I ask you some tough questions, is it okay with you? Right? Because we are all here to, to improve ourselves. हम improve करना चाहते हैं, तो इसीलिए मेरा ये नमस्कार में 2-3 layers of meaning है, right? तो सीधा मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं किए हैं अभी तक. ये स्लाइड में आशीष जी ने अभी he was telling that this is the 34th webinar, so congratulations to all the organizers, but Avinash ji, I think there is some screen. So it's yeah. one second. Now you can start and share, sir. Just check. Okay. So I just started off by saying that thank you so much, and the meaning here is that not only namaskar to you in multiple languages. Somebody has found out Oriya is not there. Okay, my God, that's the customer, right? So so the question really is, can we be more like helping each other, asking the questions that need to be asked, and I would like to really share what has been my experience of so many years in the industry. शांति वर्मेजा जी, आपने एक स्क्रीन शेयर किया है, वो थोड़ा आप बंद करिए. ओके. One second. Again, Mr. Shanti Barmecha, please. गलती से आपका वो स्क्रीन शेयर दब गया है. They're not able to see the screen. Okay, let me see one more time whether I can share the screen. Wait, Ibrahim sir, wait. Yeah, 1 second, Shiva. I'm just giving, so you take it. Okay. So I can take it now? You can do it. Now you can do it, please. Okay. Yeah, now it should be okay. Thank you. Yeah. Oh, you can see the screen. Perfectly well. Try not to play with the screens, please. Thank you very much. Yeah. Okay. Right. I think we can see the screen. Yeah. You can see the screen? Okay, yes. cool. Yes. Okay. Right. So, about 34th session hai. So about literally, I think on the first 2 sessions which I did, the second session I had this slide, right, where we said there are these best practices, and really how do we use this best practices to improve profits or increase our profits and reduce the problem. So a lot of discussion has happened in the last 30 and odd days. So after discussing with the leadership team, we decided that we will focus on 2 areas. One is really on the business plan, and really what is it that we can really do over the next couple of days. So that, just now there was a discussion, will we open tomorrow, will we open 10 days later, or whatever it is. So the question really is this, right? So how many of you remember this slide? Right? If you remember this slide, आप लिख दीजिए कि yes. If you don't remember ये slide, मालूम ही नहीं है, याद नहीं है, तो no type कर लीजिए, right? So there are some people already typing yes, yes. So my question to सब लोगों के लिए, 30 दिन के पहले ये slide आया था, आप लोगों ने क्या किया 30 दिन में? काफी लोगों से हमने मिले हैं, काफी लोगों से सुने हैं, बड़े-बड़े लोग आए थे, कल भी बहुत अच्छा था session, right? So what did you do, right? After this 1.5 hours of daily knowledge series, right? Have you done anything? That's really the question. So if you have been honest, and when you go to a doctor, when you go to a teacher, when you go to a lawyer, you should be honest, right? Otherwise, he won't give you the right medicine.
right? So my question to is, no, specifically on your business plan for the next 30 days, right? Obviously, we have all done a lot, but specifically on business plan, have you been able to do something? And have you determined, आपको determine किया क्या कि आपको कितना पैसा चाहिए एक महीने का धंधा business run करने के लिए? And the next question, how many customers are required for break even, right? That is really the point, right? How many customers are required for me to break even in May? And maybe another day we will try and answer this question on how to get customers. First, पहले कुछ मुंह मीठा हो जाए types. So there is this slide about how the gold rate has gone up in the last 6 months. So there is something which is already there in the bank. So to that extent, should it be in the bank or is it in the store is a separate point that हम बात करेंगे. So I like that Shrikant Borkar says honestly nothing, right? So really this is really the time. What I will do now is 2-3 things. I have actually given a link, right? If you have downloaded that Excel sheet, very nice. If you have not downloaded, take this photograph. If you want to take a photo after the session is over, download the Excel sheet which is there. Some of you must have already downloaded. What I will do is I will change my screen to that Excel and I'll teach you how to use this particular screen. In the meantime, I want to also say something. For many of you, maybe शायद ये बहुत करते होंगे. It's already very simple, but this is probably meant for people who are, who have not been able to, who have not been doing it, right? So I'll just open that Excel sheet. Just hold on for a minute. And I'll show you how you can, all of you can now see the screen. Yes, no, all right. Yes, the screen has been shared in the screen. The link is there. Karelji, thank you so much. So what I will do here is I'll share some of the points that I mentioned, right? I have taken a fictitious company. It's called Heerawala and Sonawala Jewelers. And it is for, let's say, May. You can do it for May, June, right? I've also tried to February में हमारे पास ये jeweler के पास कितना माल था, and I'm using that as a standard example. So let's assume that 30 kgs is the inventory. That 30 kg remains as it is today, right? I have taken 4 scenarios, 4 अलग-अलग scenario देख रहा हूं मैं. Personally, I also don't know which one to finalize. Not a very easy task. I wish I am lucky. बाद में मालूम होता है कि lucky and what stage we are in, kind of a thing. What I would like you to do is really this, right? Can you see this, please? On the left hand side, you can see the fixed cost. It's now been highlighted, right? Enter whatever is your February expenses. You can do February, you can do last 6 months average, but आपको मालूम हो जाता है कि मेरा इतना fixed costs हैं, right? You can add some more, but I've just taken 5 or 6 items, which you will obviously आप लोगों को मालूम है, right? So one question I want to ask you is just by आप थोड़ा बता दीजिए ऐसा analysis कितने लोग नहीं कर रहे, right? So that I can help more such people. If there are some of you who are already doing, you can type just type yes or no. If you say me, I don't know, right? Okay. Okay, right? So maybe 70% haven't done till date. Okay. Screen cannot see properly. Please increase the size. Okay. I'll try, right? It's already at 100. So that's why I sent you a list in the morning saying that, you can type it out.
राइट नाउ आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, उसके बाद आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो देखेंगे क्या कैसे हेल्प कर सकते हैं, राइट? तो ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट? मैं पढ़ लेता हूँ एक बार सो दैट यू कैन आल्सो हियर इफ द स्क्रीन, इफ यू आर चेकिंग ऑन द मोबाइल ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है। रेंट है, सैलरी है, मार्केटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट है या कुछ बोरोड इंटरेस्ट है, ये सब डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा एक टोटल अमाउंट दैट इज, बिजनेस हो या ना हो, शायद इलेक्ट्रिसिटी का, मार्केटिंग का शायद आपने खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन रेंट, सैलरी वो सब फिक्स हो जाएगा। Now this is the interesting point and I really want you to open it on a laptop today. ये मीटिंग होने के बाद ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, right? And I'll type it for you, right? This is 100% February's actual performance. So इसमें तो शायद डाउट नहीं होना चाहिए, right? आपके पास ये 100% डिटेल्स हैं, right? हमारा पास 300 कस्टमर्स आए थे, अभी अभी बात कर रहे थे आप लोग, आपका एवरेज टिकट साइज 15,000 है। तो this is the formula which is the number of consumers, not walk-ins, consumers, that means people who have purchased into 50,000 is 1.5 CR. Then I'm assuming that, you know, gold mein there is markup, there is also markup on your value addition, that's why we are all in this business. So I'm taking it at, say, 7.5%. You can take it at 3%, you can take it at 10%, whatever is the correct number, and this is purely for you, right? So you don't have to worry saying that, oh, you know, should I do it, should I not do it? If you don't do it, then honestly आपका इसमें फायदा नहीं मिलने वाला। So if you say that, you know, my margin is something like 11.5 lakhs on this turnover of 1.5 crores, you have a 5 lakh rupee profit, right? Now the work to be done is here, right? You can take it as, like I said here, you can take it as pessimistic and I say, listen, मेरा February का business 100 था तो खाली मेरा 40 होने वाला है, तो मेरा पास 300 थे customers, 40% is only 120 customers. You can say, no, I think it will be 45%, then I'll get 135%. You can say, no, I'm getting at 56%, इसका मतलब है I'll get 168%. ये break even point है. Then if I'm lucky, I will actually recover the whole of February in March itself, in which case मेरा 300 तो 300 ही. ये 50,000 शायद customers are very nice, they come and buy more, then I'm actually ticketing 60,000 rupees. Some questions were there on manufacturing. My suggestion, my request to you is a similar version can be done on B2B also. As I'm a wholesaler, I can do a similar version on a retailer, a group of retailers. So you don't need to worry about which individual retailer. आपको कौन सी individual retailer का जरूरत नहीं है, सब शायद इकट्ठे करके आपने calculate कर सकते हैं, right? तो आपने, I'll show you simple examples. तो ये देख लीजिए, ये 40 है और ये नंबर देख लीजिए नीचे 10% है, ठीक है? ये 40% को मैं इतना पेसिमिस्ट हूँ क्योंकि कल सुबह आया है कि maximum number of new virus infections has happened. I don't think red zone will even get off. Green zone भी red zone हो जाएगा, whatever, right? If I say 25% only, ये अपने आप shift हो जाए. Okay? Are you with me? Right? I'll try and mix. Please, just one thing, right? Can you speak in Hindi, because many don't? Yeah, so we'll try and mix. But what I'm saying is, this doesn't require any Hindi English, right? You just follow what यहाँ लिखा है, right? इतना तो शायद आपको मालूम है. Estimated sale 25% है. Consumer is now 75%. My ticket size also drops, right? नहीं, हमारा 75%, 75 retailers customers हो गए, लेकिन मुझको शायद हमको 40,000 रुपये का billing हो सकता है, right? If I take 40,000 rupees, then I have a kind of a loss of 3.5 lakhs. ये 3.5 lakhs recovery करने के लिए आपको 9 extra customers चाहिए. इतना बहुत simple है, right? I need 9 more customers in 30 days. You're opening it on 15th of May. Are you opening on 4th of May? 4th of May to 4th of June. 15th of May, 15th of June. You look at it just like 30 days, right? Now, if I say that, no, it's not 25%, I'm a little more realistic. If I'm a little more realistic, I'm not taking 45%. Maybe I think I can do 50%. Observe that again, right? आपने 50% enter किए,
If you enter 50%, then this number will change, right? Are you in a position to, thanks Rahul, my colleague Rahul is typing that InstaMojo ka thing, you can copy it down there, right? You can copy it and open it later on, right? Itna tak samajh mein aaya ya should I explain it again? Gautam Gana Singh, VS, Kishore, Narwekar, right? Please type, anybody. Understood, wonderful, right? All clear, super, very happy. Right? So simple, right? So now tell me, even if you are not done, fair and easy, correct? Hi, thanks Naveen. Right? So आप 30 दिन में भी नहीं किए हैं, आपको ये करने के लिए आपको कितना, okay, I'll answer ticket size, right? कितना टाइम लगेगा ये करने के लिए? टिकट साइज इज, एक कस्टमर आता है, ज्वेलरी खरीदता है, कितना पैसा देता है आपको? 1 hour, that's all, right? In 1 hour you should be able to say I need 1 hour, 2 hours, whatever it, right? So I should be able to say this is the best part. आपने 50% एंट्री किया, आपको समझ लीजिए ये 40,000 rupees है, ये भी 40,000 rupees है, right? But with so much of gold rate increase, I think you should be able to get back your 50,000. So I'll stick to 50,000 rupees. I just need 168 customers to break even. Break even, lot of meaning है, लेकिन 6,25,000 rupees खर्चा निकाल के, not having to take money from home. That's my definition. Lots of definitions are there. I'm just saying, without having to take money from home to run the shop, I need a total of, suppose I'll just give you a simple example, right? So if you put 0 here, I need, this is also 0, there are 0 customers. I need 15 customers at whatever 7.5% margin to recover that. Okay, it's clear, right? If you're 56 or 55%, 55, 56, 54%, if you do, this ticket size has to change, right? -3. So 2 variables you have to keep monitoring. These 2, right? ये दोनों, right? Okay, I'll see this and talk, right? So if you are able to monitor or adjust those customers, कितने लोग आ सकते हैं, मेरा ticket size क्या हो सकता है, right? Yeah, 75 customers bring, Jitendra says, bring 3.5 lakh profit. Then for 2.5 lakh profit, we need 45 customers, right? I don't know, Jitendra Umidi, I don't know whether it's 2.25 lakhs profit or cash, break even. You might say I get 3.5 lakh profit from 75 customers, but mera expense is only 2.5 lakhs. For 2.5 lakhs, I need 45 customers. If you are able to get that, right, I think it's a phenomenal achievement. And people, now you tell me, Subhashji, thank you, right? Now tell me if this is simple for you, right? It's there on an Excel sheet. You can do it on paper and pencil. If you have a printout, take a printout, whatever. I want you to tell me if you're easy to understand, easy to implement, or you want me to correct it again. I want to explain again. Yeah, Gautam, focus on any customer, but I need to know how many customers I want. That's the point I'm saying. Okay. Thanks, Naveen. Please, once again. Okay, I'll quickly say I've kept it time of 2:30, so I got 5 more minutes, right? Download this Excel sheet, open it on a laptop, ask your chartered accountant. If you don't have anything, is just think and put a number. Mera guru, right? He has always told me it is better to be approximately right than perfectly wrong, right? So if somebody can type, please type. Better to be approximately right than perfectly wrong. So हमको ऐसा जरूरत नहीं है कि my electricity bill is 22,222. 20,000 is okay, right? Same way, put all the numbers. एक miss हो गया तो भी no problem, right? So if I put that number, then this is the thing that you have to start playing around with. ये तो शायद आपको मालूम होना चाहिए,
right? Yes, you can download it after the session. 300 people is what approximately I got. If you don't remember, if you don't have, don't worry, right? I think I'm getting about 8 people. Okay, so 8 into 28 days, I got 8, whatever, 260 people, right? Now, good question. How do I know the signs of sales? A very difficult answer, but get at least this much into our mind. I need 162 customers. 162 customers in 30 days is what? 5 people a day. How many staff I have got? I have got 20 staff. Can I get them to reach on the phone and call 100 customers? If I call 100 customers, maybe 5 people will come. Right? Is that now making sense? No, number of pieces per buyer. Okay, if you have that, you can take. That's why I'm saying simply ticket size. Gautam has done that. Very nice. That's why I said consumer, Ashok Rajpal. It is consumer, not walk-in. Cool? Okay, right? 2-3 more minutes. Any other question? Margin section is, what is your margin on a product that you're selling? If you're selling 50,000 rupees, आपका gold में markup है 3%, 4%, 5%. What price you buy gold? What price you sell gold? And what is the making charges, average making charges to average making charges, right? That's ticket size. Ticket size is, I came to your shop, I paid you 50,000 rupees. Somebody else came to your shop, she paid 45,000 rupees. And somebody else came and paid 75,000 rupees. Put all of us together, 50, 1 lakh, 1,50,000 divided by 3 customers, you'll get 50,000 rupees ticket size, right? Yeah, plan for wholesaler, same thing. You have an overhead of a shop in Zaveri Bazaar. I have got, let's say, XYZ as retailers. Put all the retailers bills together. You say, listen, if I do 20 retailers at an average of, let's say, 10 lakhs, I do a 2 crore rupee business, right? Okay, right? The link is already there on WhatsApp, and on Rahul is already pasting it. You can copy, right? You can download actually. Okay, simple, possible, not possible. इतना मेहनत करने के बाद. No, we are not talking about any inventory so far. We'll talk about inventory later on. Yeah, thanks, Chintan. Okay, fine. So what I'll do now is, I'll switch back to the main other presentation. Yep. Okay, so somebody who's still searching for the link is there. You can take a photo now, go back and download it later on. Okay, right. We'll talk about little more, like Ashish also said, my favorite stuff, right? First, let me ask you this question, and I want to specifically mention Ashok Meenawala ji. We just the next point I'm going to raise it. He actually called up and he said, this is something which we need to discuss, right? How many of you take inventory count on a daily basis? Hindi mein, right? कितने लोग आप daily count लेते हैं? Morning, evening, yes. We do. Abhishek, we do. No. Okay. Once a week. Okay, let me ask you a ulta question. No, especially for people who are not taking the thing, right? Aapka car is parked in the car park for the last 40 days.
if there was a leaking tank, right? And this is actually Ashok Minawalaji's example, right? If there was a leaking tank, you think you start the vehicle whenever you want to go. All those people who are taking, you know, once a week, Gautam, all of you, right? If the Mukesh, so a lot of you now saying that Dhawanam, hi Dhawanam, Ramesh, right? So the question really is not acceptable, right? You must take the stock on a daily basis. Okay, right? Cars are getting cleaned, petrol tanks are not getting checked, Naveen. Right? So you need to take a daily stock, right? Need to take a daily stock. And like what we are saying is that if you have missed it out today, and if there is a theft today, and if you want to come to know about it 3 days later, then you are not in a position to go back to 3 days of even so-called CCTV to evaluate, right? So really there is a need to do at least the count on a daily basis. Now the next question is, I don't know, maybe you have a better idea. Tag with gold weight and diamond weight. Okay, so physical check, if you are even in a position to subere se sham mein, subere और शाम में आप अलग अलग समय में आप टैग और सिस्टम का मैच कर सकते हो, बहुत अच्छा है. But another way is something called perpetual stock taking. Perpetual stock taking ऐसा नहीं है कि हमने 8:30 बजे हमने वो stock taking करने के लिए शुरू करेंगे, right? The problem at 8:30 is everybody wants to go home. Nobody wants to do stock taking. Correct? Right? So what you should do is pick up a tray during the lull period. सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक तो कुछ ज़्यादा business नहीं होता है, right? So 7:30, whatever, right? During the day, 10 o'clock in the morning to 5 o'clock in the evening, take one tray and keep on checking, right? Check for the tank, check for the clarity, check for the whole product, like a QC check. If you're doing a QC check of the weight of the product, tag theek hai kya, price theek hai kya, then you are really in a position to check the problem hopefully as soon as possible. If you're tagging to subere sham to quantity to chal raha hai, that is very nice, right? But you can go to the second level, Gautam, right? You can go to the level and say, listen, I will do a random cross check. Pick up a counter and I've written specifically इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, राइट? काफी चीज देखे हैं हम लोगों ने कि वो इंटरनल ऑडिटर्स आर समटाइम्स बेटर, समटाइम्स एक्सटर्नल ऑडिटर्स आर बेटर, राइट? सो ठीक है, सो लेट्स, दैट इज बेसिक. अभी ऐसा मास्क हो गया ना, ऐसा नाउ द न्यू रूल फॉर अस शुड बी दैट वी विल टेक डेली स्टॉक, राइट? How is it going? How is it going? How is it going? Okay, right? Cool. मेरा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो, ठीक है? Okay, stock चला गया. Next topic, right? Okay, hold on, stop, right? Second question, what do you understand by this statement? A lot of manufacturers, I'm assuming, are there. Before the session started also, we were talking. There has to be sync between manufacturers and the retailers. Hello. Today, everybody is on a push, right? Everybody is pushing. The manufacturer is pushing because I've got capacity. The wholesaler who is buying is, guys, my request to you is please hold on to my questions, right? Don't disturb the flow of thought. Otherwise, simple answer is we'll cut off all the chat over there. Right? The reason why we are doing it interactive is I'm trying to respond to you, but don't go beyond my topics, please.
So the manufacturers are putting in, saying that, listen, I'll do a special deal for you, or I'll do you volumes. I have got capacity. I have a target to do. The wholesaler is buying and he's sending it to a, let's say, a retailer, saying that, sir, you buy this, you buy this, you do this, you do this. And we as retailers, we are again pushing it back to in front of the consumer, saying that, buying, upselling, cross-selling. I also teach, Ujjwalji also was telling yesterday, right? So buying, cross-selling, upselling is part of our life. But what is really, really happening in this entire value chain really is that it is coming and getting stuck in every, it's like, what is that? Cholesterol in your body, right? Everywhere in the body, it is getting stuck. The entire pipeline in the mix, right? So entire pipeline mein stock stuck up ho gaya hai. Okay. So if there is a stock stuck up at the pipelines, then we need to clean up the pipeline, right? Now, the next question to all of us is my favorite, right? So it's, you can very easily make out that ye ghar ka kaam hai, right? So what I really want you to do, and I wanted to give also an instruction, right? Please 2 bottle ले लीजिए, एक में लाल वाला कलर डाल दीजिए और एक में हल्दी डाल दीजिए. इसमें कुमकुम और इसमें हल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? आपको चाहिए तो मैं कल रात में सोच रहा था Evian वाटर डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, राइट? This is, can you read what is written there? क्या लिखा है? 66% is only saleable stock. Hello guys, please stop every other conversation. Just listen to what I'm saying, right? We'll talk about all softwares later on. 66% of the stock is good. 34% of the stock is bad. Is that approximation correct? Right? 66% of the stock is good. 34% is bad. Right? Exactly the same manner, 66% of your conversions is happening in your showroom. 34% of the customers are going out, walk out, right? Is that a agreed number? We can fight saying that 30 nahi hai, mera 20 hai, 25 hai, and all that, right? But all of us have got a dead inventory, which is called golden furniture, right? Hamara wooden furniture ke saath hamara paas golden furniture bhi hai, right? So the question to all of us is, right, what can we do, right? I'll give you one shocking number. क्या है, कितना shocking है ये number? It is 1 lakh crore, right? And I'll explain to you what is 1 lakh crores. We are supposed to be a 3 lakh crore turnover country in the industry. Correct है? Fight करेंगे चाय पे, 3 नहीं है सर, वो 3.5 है, अभी 2.5 हो गया है, whatever it is. Let's assume it is 3 lakh crores. We're typically doing 3 rotations. Some are doing 1.5, some are also doing 4 or 4.5. But let's assume it is 3. Which means that every night we are sitting on 1/3 of the furniture. Right? If it is not sold today, for me it is golden furniture. वो 6 months के ज़्यादा है, 6 months से कम है, वो सब बाद में है. Now the question to all of us is, right, if we are in a position, ये हमारे से ये हो सकता है कि ये 1 लाख करोड़ का माल हम कम कर सकते हैं. Is there money for all of us? I like the word kalakar, which Venkat, my old boss, told that day. Start calling them kalakars, right, rather than karigars. Kalakars, manufacturers, wholesalers, retailers, all staff and consumers. Is there money if we optimize? Just tell me. Aji, not even 1 rotation. I agree with you. Okay. So here is that opportunity. Here clearly is the opportunity for all of us, right? 1 stock rotation in diamond, 2.5 stock rotation
in gold, right? And whatever wholesalers are saying. If we are able to think, and I have got something for the wholesalers and the retailers also, right? Now I want you to do this second job. Please create a merchandise report target for yourself, right? अपने आप के लिए एक मर्चेंडाइज हेल्थ रिपोर्ट लिखवा दीजिए. मेरा 2019 में मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा लॉजिक ये है कि 6 महीने से ज्यादा कितना था माल. आई थिंक 40%. गोल्ड ज्वेलरी में 40% है 6 महीने के ऊपर. इस साल में, राइट, 2020 में या आगे अगले 6 महीने में आपने इसको कितना कम कर सकते हैं, वो ये आपका टारगेट है. It is not the target of the staff. You are the costliest employee in the company and you are the investor. You have to do this work. आपका पर्सनल टारगेट लेने का है. कल उज्जवल जी ने बताया एवरीडे एक गोल रखना चाहिए. मेरा स्टैंडर्ड गोल है शायद, इसको कैसे कम करेंगे. आज कुछ किया क्या, मेरा 1% इंप्रूवमेंट हुआ क्या, आधा % इंप्रूवमेंट हुआ क्या, मेरे एक एक्शन लिया क्या इसको कम करने की, राइट? कितने लोग इसको आपका डेली गोल रखेंगे. Cool. Gautam says yes, Naveen says yes, Chintan. Okay, fair point, right? If you are having that extra money, पैसे हैं आपके पास extra, then we have the money to favorite with manufacturers. You have the money to give them more, right? You have the money to spend on marketing. You have the money to spend on consulting, right? You have the money to spend on a better customer service to retail, to consumers, because you are no longer losing money on inventory. And I don't know whether I have an Excel sheet. You must take this, right? If you are looking at a 30 kilos of stock, 12 crores, 30% is 4.5 crores. If you had 5 crore worth of cash today, please tell me 15%, एक साल में 15% आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, तो 5 करोड़ का कैश है आपके पास, आपको एक साल में कितना मिल सकता है, इंटरेस्ट अलोन कितना मिल सकता है? $45 lakhs, 75 lakhs, 5 crores, my dear friend, 75 lakhs. 75, 25, both of you. 5 crores, 15%, 75. Now tell me, if you have this 75 lakhs in your hand, what all can you do? Please type. That's the question that I want to ask you people. आपके पास 75 lakhs का कैश हो सकता है, and I'm taking only 30 kgs का इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री. सबके पास, थोड़े लोगों के पास इससे ज्यादा भी है, काफी ज्यादा भी है. क्या क्या कर सकते हैं आप? So many things. Oh, good idea. You can lend and make interest. Repay loan. That's the worst. You're borrowed money from somebody, you're paying interest on it, you're keeping it in your golden cage, and you're not earning, and you're actually earning double the time to pay it off. Open new showroom, better cash flow, expansion, FD, training. Okay. Now, what is the problem really? The problem ये है कि, do you agree that this is what we have already? And पूछते नया चाहिए, नया क्या है, नया क्या है, नया क्या? कस्टमर पूछता है हमारे से नया क्या है, हम पूछते हैं वेंडर से नया दिखाओ, नया दिखाओ, नया दिखाओ. Okay? कितने लोगों को ये ऐसा दिखता है कि हमारा लाइफ ऐसा है? We are not
perfect, but we want to be like that. If you want to be like that, you need to work on it. Exercise karna padta hai, right? Otherwise, knowledge without action is pure entertainment, right? Okay. The problem is that हम लोगों को नहीं मालूम कि हमको कितना माल चाहिए एक सेल करने के लिए. ये कितना पुराना का डेटा है. 2016 में आज इंटरनेट इंडस्ट्री इतना बड़ा नहीं था, इतना एनालिसिस नहीं था, शायद अमेज़न नहीं था, फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट का कंपनी नहीं हुआ था. फिर भी इन लोगों के पास इतना डेटा है कि एक कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए क्या 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 करते हैं. 100 carts to be filled, 100 products need to be seen by the shopper, then finally 10 carts, 10 products will get added to the cart, एक खरीदता. Now tell me, हम लोगों के पास हमारा सामने बिल्कुल सामने कस्टमर आता है, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि एक कस्टमर को कितना दिखा है तो वो खरीदता है, right? Naya showroom all over. Move to the next topic, right? So how many of us know that we need X number of pieces to make a sale? कितने लोगों को मालूम है? एक चेन्स काउंटर है मेरा पास, वो 8 ग्राम्स to 12 ग्राम्स का चेन्स है. मुझको कितना चाहिए? मुझको 40 चाहिए, 50 चाहिए, 75 चाहिए या 100 चाहिए? आपको मालूम है क्या? They can tell you. In the internet industry, they can tell you that I need 45 on an average. If you are able to build like that, then आपका ये dead inventory कम हो सकता है. Okay? Because this is what I said, concept of range. Concept of range ये है कि मुझको an average salesman requires maybe 60 chains in that space to actually make the sale. If you are Superman, you may need 20 chains. If you are an inefficient salesman, you may need 100 chains. But an average salesman requires 60 chains चाहिए वो sale करने की. अब बताइए आप लोग, ऐसा कुछ आप assortment build करते क्या? Do you build an assortment like this? या जाते हैं उसके बाद में बात करेंगे? Okay, of course, Atul Mehra, yes, Dinesh, yes, roughly, yes. Hi, Rajesh. Weight-wise, design-wise assortments required. Yes. We have an ideal for every category. Okay, very nice, right? So if you're really building it, improve upon it, right? If you're not building it, आपके पास अभी ऐसा नहीं है, तो शुरू करने का, right? ये हमारा कोरोना का zones, red, yellow zone, green zone and red zone, yellow zone and green zone. आपका स्टॉक में भी यही चलता है, राइट? वो ग्रीन जोन समझ लीजिए आपके पास सेल्स है, सेल्स अच्छा वाला, राइट? येलो इज दिखाने के लिए, रेड तो गोल्डन फर्नीचर हो गया, राइट? तो आप अभी सेग्रीगेट कर सकते हैं कि हमारा रेड ग्रीन जोन में ग्रीन क्वांटिटी कितना होना चाहिए, येलो क्वांटिटी या ऑरेंज क्वांटिटी कितना होना चाहिए और रेड कितना होना चाहिए, राइट? तो देन आपको दोबारा कितना ऑर्डर करने का है, कितना नहीं ऑर्डर करने का है. रेड कलर है तो कितने कम कर सकते हैं, राइट? समझ लीजिए आपके पास 90 चेन्स, राइट? उसमें कुछ 30 या 40 या 50 मूव नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर सकते हैं, राइट? तो उसको कम करने के बाद कौन सा फास्ट मूविंग या अच्छा वाला चेन हमने वेंडर से ले सकते हैं. ओके, सेम थिंग, right? In fact, there's another nice slide. This I'll show you. This is the problem with us, right? हमारा पास ये 360 days का स्टॉक पड़ा रहता है, 275 days का स्टॉक से ऊपर पड़ा रहता है, 180 days से स्टॉक पड़ा रहता है, which is that 180
6 months and above का dead inventory. So if you are tightening, अच्छे से अच्छा हमने ये rotation शुरू कर सकते हैं, तो आपका profitability ज्यादा हो सकता है. Same point, right? You have to know कौन सा. Generally हमारा bangles, necklaces और sets में stock ज्यादा है, लेकिन movement slow होता है, right? वहां भी आपको मालूम होना चाहिए कि sure customer ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चॉइस चाहिए, वो सब ठीक है. बट आपको ये इंटरनेट वाला एग्जांपल दिया ना, आपको मालूम है, राइट? देन आपको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट? आपको ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, वो सब आप लोगों ने एडजस्ट कर सकते हैं. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इफ यू डू दिस अप एंड डाउन एडजस्टमेंट, अभी हमने शुरू किया 60 चेंज से, थोड़ी देर के बाद सेल नहीं हो रहा है तो हमने 80 चेंज करेंगे. ओके जी, सेल अभी ठीक हो गया है, तो यू शुड कीप 80 चेंज. नहीं 80 चेंज ज्यादा हो दिख रहा है तो हमको 60 चेंज पे आ जाएंगे, सीजन है या सीजन नहीं है, राइट? सो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू ऊपर नीचे आप एडजस्ट कर सकते हैं. सबका प्रेजेंट बेनिफिट क्या हो सकता है, राइट? फाइनली एंड ऑफ द डे ऑफ इज रियली क्या बेनिफिट हो सकता है, राइट? इफ यू डू दिस प्रॉपरली, राइट? आप ही बताइए गोल्डन फर्नीचर कम होगा क्या, राइट? इफ यू से यस, टाइप गोल्ड GF and yes. Let's see how is the response. Do you agree? Do you don't agree? GF टाइप करो. Very nice, right? 15% of new furniture can now give you, I think, 20% more sales, right? Now tell me, if you were to do, yes sir, I'll handle that, what to do with golden furniture, right? Do you think your sale will improve? We'll think about what to do with the golden furniture. By what percentage you think sales will improve? Because you have invested precious money in it. Kitna ho sakta hai? Obvious. If sale does not improve, my profit will increase. I don't know. 15%, 25%, 30%, 25, 30%. Okay, right? So if you are stuck truly with gold furniture, gold antique furniture, right? How much percentage of it is more than 360 days? Let's talk about more than 360 days. Just type. Sachin Jain says I can bring down investment. Okay. How much of your inventory is more than 360 days? Okay. Oh my God. Okay. Right? Between 25 to 30 to 40%. For me, the simplest explanation is really, what was the gold rate 360 days ago? What was the gold rate? And what is the gold rate today? 3,000, 3,300, 2,900. 1 year back, 30,000, 32,000. If it was 30,000, 32,000, and what is today's gold rate? That's all. 3,200 to 4,700. Now what will you do? I want you to tell the answer. Stop. Gold rate theek hai. What do you want to do now? Bas. That's the answer. If you are able to release the next 10, 15, 20% of your cash from the system, you're sitting on cash. If there is somebody willing to borrow, give that money. If you just take an approximate number for having listened to it for the last, whatever, roughly 1 hour,
of melting that gold, whatever is the number you have in mind, that 10%, 15%, 20%, right? And then I melt it tomorrow morning, the day I open up. I understand there's a problem with diamond jewelry, right? Just plain gold, if you were to melt, and I'm assuming there is a market for giving it on credit and getting the principal and the interest back. Just ballpark number, tell me how much will be your profit in the next 1 year. Yes, melt and lend cash on interest. 40 lakhs? 1.5 crores? Put some value, put some value. Okay, biggest opportunity is reduce debt. Okay, good idea. 30 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, 2 crores, whatever it is, right? Part of it, please contribute to the Prime Minister's Relief Fund and the GJF fund. Okay, so clearly, there is enough reasons to do this. Okay, as far as diamond jewelry is concerned, sure, there is no simple solution. But even there, what is the share of gold in the diamond jewelry? 20%. Okay, release 20%, right? Then you're sitting on loose diamonds. Now, if you were to use the loose diamonds to make fresh jewelry, hopefully if required, not because I'm sitting on diamonds, I'm going to make jewelry. I will make jewelry because there is a need from the consumer saying that हमको ऐसा वाला jewelry चाहिए. Otherwise, it will remain as it is. Get my point? Yeah. Boss, listen, you purchased it at 30,000 rupees gold, you're selling it at 45,000 rupees gold. On diamond, the breakage is negligible. Ask the manufacturers. Manufacturers are there, please tell what is the diamond breakage cost if you break diamond jewelry. Okay. Cool. How is it going? Okay, there's a summary. 5%. Aqua Regia, no loss. Okay. So you will have more customers rather than unhappy customers, improved ratio, काफी benefited, right? So how do you like this whole thing? 1 hour. And then I will move to the next session. Some more. There's so many of you. Quickly. I don't know how many of you. 800, 775. For somebody writing, what about Kundan and Polki, right? What percentage of your business is gold jewelry? How much is Kundan and Polki? Please type. Putting into action, please take people like us. Honestly, Gautam, I'll give you an example, Gautam. There was one call, somebody purchased my book and, I had a long conversation with him. And finally I said, why don't you do this? And you guys know my Hindi is not so good, right? So he said, sir, हमारा पास हिम्मत नहीं है. So हमने किसी से पूछा कि ये हिम्मत क्या होता है, right? So that is where people you need I'm not saying me, but you need a mentor who can push you, right? Otherwise you are staring at see, these are not my numbers, right? Whose numbers are these? Did I give you these numbers? Please tell. Did I give you these numbers? No.
So whose numbers are these? These are your numbers. You are staring at 50 lakhs, 1 crore, 1.5 crores, 2 crores, 5 crores. Right? So if you don't do it, who else will do? Right? In fact, you missed that point, I think, which I said, you are the costliest employee in the company. Your family has entrusted you to take the correct business decisions. Now, I'm going to ask you, if I'm part of the family, listen, we have given you the right and the responsibility to make the right decisions. Why are you not making those decisions? Unfortunately, our parents are too nice, right? They never ask these tough questions. It is not, like he says, Ashok ji says, right? You need brains. I'm not even saying brain. You need to take the call. Okay, I've crossed 3 o'clock. I got another 15 minutes and then we'll do the, okay, one small one, I think, inventory rules. Green products are what you will keep. New products, you will need to experiment, and simply no red product. वो 3 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा, लेने दो. But this is the way you need to move. Okay. I got 15 minutes, then we'll open up for question, right? One more time. How is it going? Any specific questions you please put, I'll try and answer. Okay, this is all for the manufacturers also who are in the system, right? I saw Ajay Jain and all that. See, the problem as I see is this, okay? We accept the people who come to your shop if I are a retailer, you're going to a wholesaler to buy is one deal. But if you are in a smaller town and you're expecting somebody to come and show jewelry to you, especially if you're buying diamond jewelry or studded jewelry or whatever, once upon a time, they were actually carrying real diamond jewelry. Today, they don't even carry real diamond jewelry. They're all carrying CZs and copper CZs. If you visit any of us as a manufacturer, I've got a room full of copper CZ designs. And my capacity to carry is only 2 suitcases, right? And when I call you and ask you, boss, sir, please give me some time, please give me some date, please give me what you want, the only answer that comes from majority of the retailers is Naya dikhao. Correct me if I'm right. Tell me, yes, am I right? Or no, I'm wrong. Right? So not even astrologers could forecast corona, correct? How do you expect a poor salesman to really remember, understand what is your customer's requirement if you yourself don't know what is your customer's requirement? That's the question I'm asking you. So my subsequent question to maybe partial answer really is, this is our, not even an answer right now. This is what is our relationship today. Right? अब देख रहे हो typical buying and selling relationship क्या दिखता है? There is one boyfriend, one girlfriend, right? And then the boy is doing what? Double dating. हो रहा है नहीं हो रहा है? तो आपका वेंडर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है. आपका वेंडर उनका रिटेलर के पास लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं है. लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि हमने 20 साल से खरीद रहे हैं. मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए, फ्रीक्वेंसी. आपका 3 रोटेशन चाहिए आपको गोल्ड ज्वेलरी में, या 1 रोटेशन चाहिए डायमंड ज्वेलरी में. आपने 1 साल में आपका माल, उनका क्या रेंज है, 10%, 15%, 20%, वहां से खरीद रहे हो या नहीं है. If you are not doing that, then he is also searching for a new girlfriend or boyfriend. You are also searching for a new vendor all the time. So no wonder we are not able to do much. That's my personal view. So क्या करने का है? Simple, right? Review your buying habits, right? Sync with the supplier. Create an Indian marriage. अभी वो हमारा इंडिया में भी आ गया शायद, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, relationships. They're today, gone tomorrow.
That's our relationship with our vendor. It's applicable to vendors also. I've asked many vendors, how many retailers do you sell to? Sir, हमारा तो 300 है retailers. लेकिन 3 महीने में कितने लोग खरीदे हैं? 20. Right? So if you are buying once in a blue moon, then my interest to supply to you as a retailer be only that much. आपको कुछ अर्जेंसी माल चाहिए सर, नहीं सर अभी वो एक हफ्ता लगता है, 2 दिन में शायद हो सकता है, क्योंकि if you are buying 10% of my sale to you, if I'm selling 10% of my business as a wholesaler to you, then वो 4 ग्राम का अंगूठा के भी आपको 8:30 बजे, 10 बजे, 12 बजे आपका घर में मिल जाए. But if you are 1% of my business as a wholesaler, as a manufacturer, then I will give you 1% of 1% attention to your phone calls. Do you guys agree with me? If you agree, type whatever you feel like. Right? So what I want you to do, मेरा request ये है कि प्लीज स्टार्ट वन वेंडर लॉयल्टी प्रोग्राम. हमको मालूम है कि हमारा कस्टमर का लॉयल्टी प्रोग्राम भी नहीं है, वो अलग अलग दिन का चर्चा का दिस टॉपिक है, हाउ टू बिल्ड सीआरएम फॉर कंज्यूमर्स. मैं बोलता हूं कि प्लीज बिल्ड ए वेंडर लॉयल्टी प्रोग्राम. आप बताइए सब लोग इतना कितने लोग हैं? right, 700-800 लोग हैं, right? If you are 600-700 people, if you start building a vendor loyalty program, आपको अच्छा माल मिल सकता है क्या, बिकने वाला माल मिल सकता है क्या, अच्छा प्राइसिंग मिल सकता है क्या, क्योंकि मुझको भी मालूम है कि आप मेरा 10% का कस्टमर है. अभी किसी वेंडर से पूछो, सब लोगों ने 2-3% से ज्यादा नहीं है. आप लोग रिटेलर से पूछो, नहीं सर उसके पास ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं. If all of us really get together, आप बताइए कि हमारे को ये 1 लाख करोड़ का माल चाहिए क्या, डेड इन्वेंट्री एवरी डे. Then there is money for, okay, right? And there is money for every one of us. You agree? If you put all of these things in place, action करेंगे, 1 साल से ज्यादा वाला मेल्ट करेंगे. चाहिए तो हम ऐसा लोगों से पूछो, you want me to come and speak to your parents, we'll speak. Come on a Zoom call. हम एक्सप्लेन करेंगे इसका फायदा. ठीक है? Okay. How is it going? Guys, I have one request. There's so many of you. Give me one comment at the end of 90 minutes. Or 75 minutes. Okay, no. 12 hours. Late payments by retailer nahi hai, Ajit Jain. Identify retailers for whom you are 10% of the business. No, right. Some very interesting comment. What can a retailer do if there are so many vendors approaching you? No, the answer is I'll speak on your behalf as a retailer. Sit down with a certain number of retailers. आपके पास 300 retailers हैं, vendors हैं, उससे बैठो, उसको बोलो भाई देखो मेरा 100 करोड़ का धंधा है, मैं सब लोगों 10 लोगों के या 5 लोगों के साथ मैं 10-10 करोड़ का धंधा करूंगा. आप क्या देंगे हमको? आप आज 50 लाख का दे रहे हो धंधा उसको, इसीलिए आपको 200 लोग आ रहे हैं. लेकिन आप बैठ के 10 लोगों से बात करो, 10-10 करोड़ 10-10 करोड़ 10-10 करोड़ का धंधा देंगे आपको 1 साल में. आप क्या करेंगे? हमको देगा या नहीं देगा वो? No, vendors will not take you for granted. You work with a vendor for whom you are important. See, end of the day, you have to match. You go to a vendor who is 10,000 kgs or whatever it is, and you want to buy 1 kg, I will also give you that attention. You go to a vendor who is making 10 kilos of stock and you buy 1 kg from him. For him, you are 10% of his business. You go to a vendor who is 1,000 kgs and you want to buy 1 kg, you are what? 0.1% of his business. What do you prefer to work from?
Nitin, I think your problem is, do you have inventory which is not moving? So are you buying stocks because somebody gives you discounts, or do you want stocks which sell? Please give me answer to that. Yeah, Ashok ji is saying correct. No, Anand Lalwani, kick back to genuine vendors even for little rate difference. You sit with them, you tell him that, listen, you give me 10% of your business, 5% of your business. These are the things that I will deliver to you. Why is it that you guys don't deal like that? It is so transactional. Somebody, one of your retailers connected with me sometime back. He said, no, can you please do a retail training program for our staff? I said, see, normally we don't do one-offs. He said, no, we want to try for one sample. Let's see whether Zoom works or not. We did a 1 hour session. Then he says, I want another 1 hour session. I said, no, we will not do another one-off session. See, ek aapne aisa, you do it in bits and pieces, nothing will work. If you are committed to a program, if you're committed to, to working, improving your staff, you need to make commitment. If you want to deliver 5-star customer service to your customers, you have to make that commitment. And all of it that हमने आज 1-1.5 घंटे में क्या बताया है, भाई आपसे मैं कुछ एक्स्ट्रा 1 पैसा पूछा क्या? बताओ ना, मैं पूछा क्या आपका घर से 1 पैसा लेके आने का है 1.5 घंटे में? फिर मैं बोल रहा हूं इसमें पैसा लगा हुआ है, उसको निकालो, साफ करो, रीयूज करो, रिसाइकल करो. And you are not willing to commit for the next 3 months to 6 months, either front end or back end. Then how do you expect the business to improve? Tell me, if you are so transactional. If you sit, a lot of comments, right? If you sit with your vendors and say, listen, I am here, you are here for good. Let's sign up a 1-year contract. 1 saal to try karo with 20% of your business. I'm not even asking you to commit 100%. 20% of your business, you can commit with 3 vendors and tell him, okay, listen, I'll give you 6% instead of 1% of my business. Will you work with me? There are a whole bunch of vendors here. You please tell if your retailer is willing to make a commitment of 3%, 5%, 10%, whatever is the number or a rupee value. Will you guys work with him? See the comment. Already retailers are doing the same, always promising to give you more business, but giving only less. That means you are not keeping up your word as a retailer. Gautam, that's the challenge that you have. Select a bunch of vendors who can deliver the kind of products that you want. And tell him, I'll give you, instead of buying a similar set of products from 4 vendors, buy it from one guy. Okay, cool. I think I've done with last 1 minute. Then we are open for questions. This is the number. Look at the comments. Please see, these are all truthful comments from the vendors also. Comment करके मुगर जाते हैं और wastage घाट जाते कि low with low turnover. Same vendor not providing more variety. Sit down, sir. Please sit down. Okay, stop the comments, please, and ask questions. Right? Between you and your vendors, you guys can argue it out. Avinash ji, over to you. We'll take questions. I will disconnect. Okay. Questions. Avinash sir. Ashok bhai, any questions from your side? Because most of the questions which are coming from in the chat were discussed by Shivram ji. So
I have a specific question because there are a lot of people when we talk about the golden furniture. Those people who mainly deal, there are 2-3 kinds of people. One is people who have more than 70% to 80% of their inventory, which is on the luxury side. That means Jadao and Diamond. So, and their movement process is a little slower. What's the take on that particular thing to reduce the inventory levels or what? Sure. So there are 2 ways of looking at it. I know majority of us are vegetarians and we protect animals and things like that. But the proverb is, how do you eat an elephant? Right? How do you eat an elephant is you eat it piece and pieces. Piece by piece by piece. Right? So today we don't have a policy or a procedure for old stocks. So in fact, somebody was asking me, you know, what you're telling me is long term marathon project hai, mujhko kal chahiye kuch decision. Open your showroom, wo purana golden furniture ko ek table pe dal do, pick up the worst possible piece, right? वो हमारा पास 200 पुराना कुंदन whatever जड़ा है, pick the dirtiest, completely unsaleable piece, and it probably answers Gautam's question. हो जाएगा ना? 2 questions. Hello? Can anybody sell this piece? Few people will raise their hands. The fact that 2 साल में 1 साल में वो बिका नहीं है means just to impress the boss. Melt that one piece. Melt just that one piece. Will you release 2 lakhs, 3 lakhs, 4 lakhs? Sure, there will be breakage, 2% breakage, 3% breakage. For me, the benchmark is what is the gold rate I bought. If I'm covering some amount of that cost, and if I'm coming back to 5 lakh rupees of cash, now can I do anything with that 5 lakhs? So if I do that first mindset shift, trust me, Avinash ji, it is difficult, not easy, right? I can tell easy because I have seen how many times there are a couple of our clients here, how many times, how many days, how many months it has taken to make the call. I am not underestimating the effort, right? Mushkil hai, because in our culture, not done, right? In addition to that, we are a family structure. In addition to that, my salesman has always been trained to say yes to you. कोई salesman बोलेगा क्या सर ये माल नहीं बिकता है? नहीं बोलने वाला, नहीं सर सबके लिए एक customer है, वो भी सिखाया हम लोग ये. So take one piece and melt. If there is one takeaway for me from this entire 90 minutes, I will say that is one call for. One piece. I'm not asking you in 100 kgs, right? I'm asking you for one piece. Then you come back and say, listen, I'm now capable of, redeploying that 3 lakhs or 2 lakhs or 4 lakhs. Ashok bhai. I think Nitin bhai wants to say something. Nitin bhai, over to you. I have a question also. With due respect to all, Shriram ji, मैं एक रियल एग्जांपल देना चाहता हूँ. इट विल टेक 3 to 4 मिनट. और नितिन कदम जी और अशोक भाई ने वो एग्जांपल सुना है. मैं एक एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ सर, इन्वेंट्री कंट्रोल जस्ट इन टाइम का. मैं पर्सन भी बताता था किस पर्सन है. आपने मिस्टर किम का नाम सुना होगा. मिस्टर किम जिसने इंडिया के अंदर एलजी को इंट्रोड्यूस किया है. एलजी को इंट्रोड्यूस किया है. एंड फॉर्चुनेटली आई हैड बीन टू हिज वन क्लास इन एज अ वेंडर मीटिंग. हम प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, वॉशिंग मशीन एंड कूलर्स और ये सब बना के देते हैं. तो सर एलजी के अंदर जब इन्वेंट्री कंट्रोल आज के 7-8 साल पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वो हमने इम्प्लीमेंट किया हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर. मैं आपको सीधा क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ. एक प्रैक्टिस होती थी सर, एक स्टैंडर्ड, कि जब हम मटेरियल बना के देते थे इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर और एक्सट्रूजन के अंदर एलजी को, और हमारे पास में उनके रेफ्रिजरेटर का जो होता था एक कंटिन्यूस लाइन बनती थी, और वो रेफ्रिजरेटर का जो था हम लोग उन लोगों को
जो माल बना के देते थे, जो मटेरियल बना के देते थे, उसका पार्ट जैसा फॉर एग्जांपल नीचे का स्टैंड और ये सब मटेरियल, तो वो सारी चीजों के लिए हम लोगों के पास में बाय रूल 35 डेज की इन्वेंट्री करना पड़ता था हम लोगों को रॉ मटेरियल रेडी। और उसमें भी क्या होता था कि अलग अलग कलर के स्टैंड जाते थे रेफ्रिजरेटर के, उसका जो एक का स्टैंड है, अंदर का जो मटेरियल है, उसका हैंडल है, सब अलग अलग कलर जाता था। 55 दिन की वन फाइन डे मिस्टर किम ने हम लोगों को मीटिंग के अंदर बुलाया और मिस्टर किम ने 3 साल के लिए कंपनी लिया था कि 100 मिलियन की कंपनी या ट्रिलियन की, आई डोंट नो, बनाऊंगा करके। और उन्होंने हमारे पूरे फैक्ट्री के स्टडी करी और स्टडी करके आपको एक मैं गूगली देता हूँ, हम लोग 92% का हमारा कॉस्ट थी और 100 रुपीज में मटेरियल सप्लाई करते थे, 8% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था। मिस्टर किम ने आने के बाद में 35 टेबल लगाए, सब वेंडर्स को बुलाया और उसमें लिखा था आइदर साइन इट और लीव इट। और हम लोगों ने वो पूरा जब पढ़ा तो हमको उन्होंने जो 92 रुपीज में हम लोग मटेरियल बनाते थे, वो हम लोगों को उसने बोला कि ये आज के बाद आप 85 रुपीज के अंदर ये मटेरियल देंगे कंपनी को डिस्काउंट में। और हमसे पूछा कि तुम लोग कितना मार्जिन देखते हैं, हमने बोला 8% ग्रॉस मार्जिन है। तो बोले 8% मार्जिन में आप लोग प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आपका मार्जिन कम से कम 12 से 13% होना चाहिए। तो हम शॉक हो गए कि 85%, उसने 85 रुपीज में मटेरियल मांग रहा है हमारे को और मार्जिन भी बढ़ा के देने की बात कर रहा है। तो उसने फिर हमारे एक एक के फैक्ट्री के ऊपर बात करके इन्वेंट्री कंट्रोल जस्ट इन टाइम किया। तो शिवराम जी, हम लोग उस समय जो था, हम 35 डेज का मटेरियल रखते थे हमारे पास में, जो 35 डेज चले, रॉ मटेरियल है, मटेरियल बना के रेडी रखता था। कंपनी से एक कॉल आता था कि 500 स्टैंड आप भेज दीजिए ये ब्लू कलर के, 500 मैरून कलर के, 200 भेज दीजिए ब्लैक कलर के। अब ऐसा तो बन नहीं सकता है क्योंकि एक कलर चेंज करने के लिए यू हैव टू चेंज द कंप्लीट रॉ मटेरियल, ग्रेन्यूल चेंज करो, पूरा मटेरियल रखो। मिस्टर किम ने क्या किया, आप इमेजिन करिए, मिस्टर किम ने वो 35,000 रेफ्रिजरेटर जो एक दिन में बनाती थी कंपनी वीडियोकॉन के अंदर और एलजी के अंदर, हमको बोला कि आज के बाद एक महीने में आपको अब 35 की जगह 55,000 सप्लाई करना है। और सही, हमको साइलेंट करो थोड़ा, और आपका मटेरियल भी हम करेंगे। तो अब 35,000 का मैन्युफैक्चरिंग 55,000 ले जाना है और कॉस्ट भी कम करना है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से नीचे था। हाउ इट इज पॉसिबल कि रेट भी कम कर दिया और प्रॉफिट भी बढ़ाने की बात किया। तो सर एक गूगली ऐसी है कि 35,000 महीने के रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए 35 डेज का हम लोग रॉ मटेरियल रेडी रखते थे। अभी 55,000 बनाने का रेफ्रिजरेटर है कंपनी को महीने में, तो कितने दिन का हमारे पास में इन्वेंट्री होना चाहिए एज ए वेंडर, एज ए सप्लायर, ये सब चीजों के अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? 1.5 1.6 राइट, मतलब इन लैक्स बोल रहे हैं ना आप? 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स। सर हमारी इन्वेंट्री कर दिया उन लोगों ने कंपनी में जीरो। अब जीरो इन्वेंट्री में कैसे काम कर सकते हैं? सर हम लोग पहले क्या करते थे कि सारा मटेरियल रेडी रखना पड़ता था क्योंकि कंपनी भी अनऑर्गेनाइज थी। कभी भी एक मेल आ जाता था कि ये कलर के इतने इतने भेजो, रेफ्रिजरेटर के साइज अलग अलग आ जाते थे, भेजो। मिस्टर किम ने क्या किया कि पूरे 3 महीने का शेड्यूल बना के दे दिया हम लोगों को और उसने बोला कि एक टाइप का प्रोडक्शन, एक कलर का प्रोडक्शन आपका पूरा 1 महीना 15 दिन 8 दिन वही चलेगा। तो हमारी अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। और जो मटेरियल वीडियोकॉन के अंदर जो रहता था वो रहता था सर कम से कम 50 डेज का रेडी, ताकि कहीं से भी कॉल आए तो वो पैक करे और भेज देवे। तो जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल होने से उनका सिक्योरिटी का खर्चा पूरा बच गया, जीरो इन्वेंट्री आ गई, उन लोगों के पास का इंश्योरेंस का पूरा बच गया और उसके बाद में टीयर एंड वियर जो खर्चा था वो उसका बच गया, डैमेज जो होता था वो बच गया और सारा खर्चा बचा के उन्होंने उसकी कॉस्ट नीचे लेके आ गई। और हम वेंडर्स लोगों को उन्होंने पूरी सर्टेनिटी दे दिया। वेंडर लोगों को सर्टेनिटी ऐसी दिया कि आपको इस 15 दिन के अंदर कोई अनसर्टेनिटी, आपको सिर्फ ब्लैक कलर के रेफ्रिजरेटर सप्लाई करना है। आपका ब्लैक निकल गया, फिर आपको मैरून करना है, मैरून हो गया, आपका ब्लू करना है, साइजेस हो गया। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जो मशीनरी हमारी रेफ्रिजरेटर बनाती थी वो ठंडी के दिनों में रेफ्रिजरेटर सेल नहीं होता करके मशीनरी पूरी खाली रहती थी। तो जिसको रेफ्रिजरेटर देते थे, जिसको वॉशिंग मशीन देना वो देते थे। उन्होंने कॉम्बिनेशन कर दिया, हमको ऐसा मटेरियल भी दे दिया कि जो हम गर्मी और 12 महीने यूटिलाइज करने के प्रोडक्ट दे दिया उन्होंने, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के। असेंबल्ड हो गया तो मशीनरी 3 शिफ्ट के अंदर चलने लग गई, सर्टेनिटी आ गई। और जो मटेरियल
उसके ट्रक बाहर खड़ा है, वही उसकी इन्वेंट्री है। सीधा जो ट्रक आया, ट्रक आके सीधा अंदर लग गया, उसके अंदर हमारा कंटेनर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सीखने गए हम लोग। सर एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता था, एक कंटेनर में हम मटेरियल बेचते थे उनको कंपनी के अंदर बनाने के लिए, तो एक कंटेनर का किराया था 1200 रुपए हमारे फैक्ट्री से वीडियोकॉन तक जाने का। वो सिर्फ 2.5 किलोमीटर है हमारे वहां से, लेकिन 1200 रुपए लगता था। उन्होंने 3 ट्रैक्टर लगा दिए उतना ही मटेरियल चढ़ाने के लिए, जिसके ऊपर ट्रॉली होती है। 600 रुपए में मटेरियल जाने लग गया 1200 की जगह के ऊपर, तो 600 रुपए वहां पे इन्वेंट्री कॉस्ट बच गई। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ इसमें, उन्होंने क्या किया, हम जो मटेरियल देते थे क्वालिटी कंट्रोल में जाने के बाद में 8 से 9% रिजेक्शन होता था। थिकनेस कम ज्यादा है, कलर वेरिएशन है, साइज के अंदर है, क्रैशेस है, स्टिकर जो लगाया, नाम जो लिखा वो बराबर नहीं है। तो उन्होंने उसके बाद में उन्हीं का आदमी हमारे फैक्ट्री पे भेज दिया, और वो आदमी क्वालिटी कंट्रोल हमारे फैक्ट्री से करने लग गया, तो 0 रिजेक्शन हो गया। तो टू एंड फ्रो बच गया, एक्साइज बच गई, ट्रांसपोर्टेशन बच गया। ऐसे करते करते इतने खर्चे नीचे आ गए कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो हो गया। 12 महीने हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई। नितिन भाई, का कॉस्ट कम हो गया। आपने ये जो सीखा, ये जो आपने सीखा, वो आपने ज्वेलरी इंडस्ट्री में कैसे उसको कनेक्ट किया? एग्जैक्टली सर, 35 पॉइंट उन्होंने हम लोगों को जो वहां पे बताया, तो मेरी आदत है नोट डाउन करने की। मैंने नोट डाउन करने के बाद में, पहले हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए चैन लेने गए तो आदमी को बोल देते थे 1 किलो चैन लेके आ, चैने कम हो गई। तो जो अभी शिवराम जी ने बताया, आज हमारी जो ऑर्डर जाती है वो स्पेसिफिक जाती, 7 ग्राम की 8 चैन चाहिए, 9 ग्राम की 12 चैन चाहिए। सॉफ्टवेयर में ऐसा एक हमारे अरेंजमेंट है कि अगर 10 से नीचे अगर चीज चली गई, बेंचमार्क लगा है, तो हमको इंडिकेशन आ जाता है, और ज्यादा हो गई तो भी इंडिकेशन आता है, इससे कोई चीज एक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। अंगूठी लाना है तो 5 ग्राम की 19 अंगूठी चाहिए, तो 5 ग्राम की 19 अंगूठी लेंगे हम। बैलेंस में डाल के माल का सिलेक्शन करते हैं हमारे वेंडर के पास से। तो हमारा वो जो इन्वेंट्री है वो भी पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, ऑर्डर भी पूरी तरह से कंट्रोल हो गया, और रेट के अंदर कंट्रोल ऐसा हो गया कि 1 किलो माल लेने की बजाय 200 ग्राम रोज लेते हैं हम लोग। आप इन्वेंट्री कितना कम कर चुके हैं इसके बाद? सर मैंने इन्वेंट्री कितना कम करा है वो बोलूंगा नहीं, सेम इन्वेंट्री में 2 एडिशनल शोरूम लगा लिया। फैंटास्टिक, तो वही 1/3 हो गया आपका इन्वेंट्री। Yes sir. अब ऑपरेट कर सके। And he made more money by selling it from the second and the third show. This the biggest learning is that you don't need too much inventory. Oh, you don't. need effective inventory. You need the right inventory, Really? and you need just-in-time inventory. Absolutely. And I think that is the most important thing. The learning from LG that Nitin bhai did not really benefit him much from there, because Videocon is no more. But his entire business. सर एक चीज ऐड करूंगा, सब्जेक्ट नहीं है लेकिन आपको बता दूंगा, वीडियोकॉन का फैक्ट्री बंद है, वीडियोकॉन का ऑपरेशन बंद है, वीडियोकॉन का प्रोडक्शन टोटल चालू है फैक्ट्री सील होने के बाद में भी। Okay, I didn't know that. आशीष, उन्होंने वेंडर को वेंडर बना दी। विनोद जी, उन्होंने वेंडर को बोल दिया, अविनाश जी, कि आप बनाओ, हमारे नाम से बेचो, हमारा हमको कमीशन दो, और आप आपके पैसे पूरे ले लो। Okay. जो पैसा बचा था एडवर्टाइज करो। Ashish bhai wants to ask a question. Ashish bhai, please. Shivram ji, this is an age-old struggle that we all go through. How do we balance between bread and butter and variety? First and foremost is in our mind. I said also that time, customer is asking for naya dikhao. Okay, but customer is coming only once in 9 months or once in 12 months. Because customer is coming and asking for naya dikhao, my immediate question from a salesman point of view is, sir, hamara paas naya nahi hai. If you say that 60% or 70% is possible to sell based on similar looking products, and this is not exclusive to jewelry industry. The problem with us, sorry if I'm pushing this point, the problem with us is hamara 5,000 saal, 5 saal, whatever, 500 year story is that every new piece being made by a karigar is a new piece. But it is the same chain with one little change. That's all. That is called as new in our industry. Right? Sorry, sir, give me 2 minutes. Right? So if I say that I can continue, white shirts is a standard example in the garment industry. Same white shirt has been selling, this time without a collar, next time with a collar, with some modification here.
So 60% to 70% of your customers will by and large look for a chain or a bangle, number one. Number two, the customer, which is again a different way of looking at it. The customer who comes to buy a bangle today, consumer, is coming to buy a necklace later on. So the same bangle can be sold to your wife, his wife, his wife, his wife, his wife. There is no need for me to keep on changing the new bangle. Yes, I agree with you. I need newness. Experiment with 20%. If the 20% becomes a successful, you move it as a regular stock. If the 20% doesn't become a successful, 10% becomes old golden furniture, get rid of the 10% and experiment with a new 10%. Okay, thanks. आशीष भाई एक और चीज बताता हूँ. कल अशोक भाई अपने सामने 2 घंटा थे कल ऑलमोस्ट. यहाँ बैठे हुआ कोई बता सकता अशोक भाई ने कल कौन सा शर्ट पहना था, क्या कलर था? 6 फुट का आदमी 2 मीटर का शर्ट पहन के कल कौन सा शर्ट पहना था, हमारे में से कोई नहीं बता सकता. तो सर हम लोग कस्टमर को 2 दिन बाद में बुलाते, 2-3 चीज ऐड करते, वो कस्टमर और उसको जिस कलर के ट्रे में बताए थे वो ट्रे चेंज करते, उसको बॉक्स में से निकालते, पैकिंग मटेरियल वाले उसको निकाल के बताते, वही स्टॉक जो रिजेक्ट किया था 2 दिन बाद में वही कस्टमर लेके जाता है. तो ट्रे बदलो, ज्वेलरी मत बदलो. तो ट्रे बदलो, थोड़ा सा 1-2 डालो और 2 दिन बाद में 1 दिन बाद में बुलाओ या सुबह शाम बुला के दे दो. अशोक भाई कल आपका 2 मीटर का शर्ट आपका किसी एक को पता नहीं है कि क्या पहना था करके. यहाँ बैठे हुए 2 घंटे आपको लोग देख रहे थे कल. नोबडी कैन टेल कि आपने कौन सा शर्ट पहना था. वेरी ट्रू. मतलब स्टॉक में डिजाइन कम बदलो, थैली भी बदल सकते हैं तो स्टॉक नया लगे. हम कर रहे हैं सर इन्वेंट्री कंट्रोल में, ये भी एक बहुत बड़ा है. तू जो करता है वो क्यों बता रहा है सबको? अरे अविनाश जी सब करते हैं. कस्टमर है इधर. अविनाश जी सब करते हैं. नियम भाई तुम्हारे कस्टमर सब सुन रहे हैं भाई? अरे कोई नहीं, हमारा कमर्शियल प्रोडक्ट. Ashok bhai, it's already 3:35, so over to you for the final take. No, I think we've had a wonderful session But today. before asking Sayyam to go ahead, I wished I take your permission anyways. Sayyam, over to you. Yeah, thank you Shivram ji. We've had a wonderful session, 34th seminar. A lot of intakes, बहुत intakes हमको मिले इस सेमिनार से. आज के तारीख में आपने बताया जैसे कि 1 महीने से हमने क्या प्लानिंग की है. Too many intakes of knowledge, too many webinars, but what is the execution that we have planned? How much customer, second point, how much customers do we require to have a break even? फिर एक excellent balance sheet बना के दिया था जो हम wholesalers, retailers को बहुत जरूरी है बनानी प्री प्लानिंग के लिए, जिसमें हम अपनी रेंट, सैलरी, मार्केटिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सब कुछ प्लान करके अपने कस्टमर का कितने रोज के कस्टमर आने चाहिए जिससे हमारा ब्रेक इवन आए. This was an excellent thing. I think if we all wholesalers and retailers do this and go in a direction, मोटी प्लानिंग आज अगर हम कर लेते हैं तो एक ऐसी दिशा में आगे चल पड़ेंगे. आफ्टर कोविड की एक बराबर जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत नीचे आ जाएगा. आई थिंक एक और चीज आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई जिसके अंदर वी हैव टू टेक आवर स्टॉक एंड आवर इन्वेंट्री एवरी डे. वी हैव टू क्लीन आवर स्टॉक एंड क्लीन आवर पाइपलाइंस, हैव टू हैव अ क्वालिटी स्टॉक. एक सबसे एस्टोनिशिंग बात, सबके आंखें जो खुल गई कि मोर देन 1 लाख करोड़ ऑफ डेड स्टॉक इज लाइंग इन द इन्वेंट्री, ऑल द रिटेलर्स, होलसेलर्स मिला के. तो मुझे लगता है दैट इफ वी क्लीन इट एंड प्लान इट इन द वे व्हिच यू सेड, इंटरनेट के MIS सिस्टम से, बराबर सॉफ्टवेयर से, if we plan out, and I think our profitability and our rolling can increase more than 2.5 times. It is always better to have cash inventory rather than stock inventory, so that the opportunity loss, which you said, and opportunity cost which is there, it matters a lot in our industry. We need to have a mechanism which you have said again. We need to have softwares and mechanisms to order, reorder, and to improve our dead stocks. We do not. There is a biggest problem. आज के तारीख में हम wholesalers में और retailers में एक सबसे बड़ी problem है. इतने सालों से हमने आज तक अपना स्टॉक जो नहीं चलता 1 साल 6 महीने मेल्ट नहीं किया है. I think शिवराम जी, through your entire session, we've understood कि आज के तारीख में कोई भी बैंक इंटरेस्ट 10%, 12%, 14% होता है, और यदि हम अपने स्टॉक को गला देंगे, I think it is better that to make a restock and reinvent नई इन्वेंट्री बना के हम अपने प्रॉफिट्स को बेटर कर सकते हैं.
So I think we have a lot of great intakes, and I think अगर हम ये सब चीजें हमारे नॉर्मल बिजनेस के अंदर यूटिलाइज करते हैं तो द profitability and rolling will increase at least by 2 times, 2.5 times. The secondly, I want to talk कि आज about the GJF relief fund also. हम आज के एक since 20th March it has been an off, and 1.5 months से कारीगर के लिए GJF ने डिसाइड किया है कि हर कारीगर के अकाउंट में 1500 रुपया उनके अकाउंट में डाला जाएगा, ताकि खाना पीना जो सब संस्थाएं लोकल ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत छोटी बड़ी चीजें हैं जो आज के तारीख में कारीगर को रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए वी हैव ऑलरेडी ट्रांसफर्ड द मनी इन द अकाउंट ऑफ 3500 कारीगर्स। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स अभी सुन रहे हैं, ऑडियंस जो सुन रहे हैं, मैं सबको गुजारिश करूंगा कि सब जीजेसी के अकाउंट में फंड डालें, बहुत फ्रीली ओपनली इसमें चैरिटी के रूप में डालें, ताकि हमारा जो टारगेट है 20,000 कारीगर्स का वो हम फुलफिल कर सके। वन मोर थिंग, टुमारो कल नितिन जी, अशोक भाई, अविनाश जी सबने मिलके एक एक्सेलेंट सेमिनार किया है जो नीड ऑफ द आवर, टुडेज नीड ऑफ द आवर इज इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक्स। सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो सबके माइंड में है कि 30 डेज तक शॉप सबकी बंद होने के बावजूद क्या इंश्योरेंस कंपनी फिर भी उसको कवर करती है जो आपका स्टॉक है? क्या लॉजिस्टिक्स फ्लाइट खुला होने के बाद जो हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं कभी हमारा माल चालू करेंगी? एक्सपोर्ट्स के कुछ पार्सल्स अभी लग रहे हैं प्राइवेट जेट से। क्या डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके का गवर्नमेंट राहत देगी जहां पर हम 4 मई को या 18 मई को कौन सी तारीख को हम अपना लॉजिस्टिक्स चालू कर सकेंगे? तो एक एक्सेलेंट पैनल है जो बना है, इसमें मॉडरेटर है हमारे जतिन छेड़ा जी, पैनलिस्ट हैं महेंद्र भाई मुक्ति एज अ होलसेल साइड से, दिनेश जैन जी हैं एज अ रिटेलर, राजेश नीलकंठा जी बीवीसी से, राजकुमार जी सीक्वल लॉजिस्टिक्स से, और इंश्योरेंस साइड से हैं खुशहाल जवेरी जी यूनिलाइट से, भावेश कटारिया जी कटारिया इंश्योरेंस से, और सारंग देव जी अलायंस इंश्योरेंस से। तो हमारे ये 8 जो पैनलिस्ट हैं, मुझे लगता है कि अभी जैसे लॉकडाउन खुलेगा ये एक्सीलेंट तरीका है इंश्योरेंस और लॉजिस्टिक का, जिससे हमारी इंडस्ट्री वापस किक स्टार्ट हो जाएगी। ओवर टू यू अशोक भाई। Thank you everybody. Thank you for participating in big numbers. Thank you very much. Thank you Shivram sir. Thank you. Thank you.